Assalamu alaikum, dear students. Our next chapter after physics is chapter 3rd, that is the work, energy, and power. Three terms over here: the work, energy, and power. First, let we see what do we mean by work. Whenever force is applied on an object and that force makes the object to move from its position, we can say that the work is said to be done by that force. So work is said to be done by a force when the applied force displaces the object from its position. So this is the condition for the work done. Work is done by a force whenever the applied force displaces the object from its position, or we can say that whenever force is able to produce motion in an object, we can say that the work is done by that force. That is, when force produces motion in an object. When force produces motion in an object, जब एक ऑब्जेक्ट में एक फोर्स की वजह से मोशन हो जाती है, then we can say that due to that force work is done. For doing work, energy is required. जब भी किसी फोर्स की वजह से काम होता है तो चाहिए क्या हमें, that उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी. For doing work, energy is required. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो एनर्जी काम करने के लिए चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से आती है? अगर ये हम ह्यूमन्स और एनिमल्स की बात करते हैं, इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, this energy is provided by the food that we eat. This energy for doing work, it is provided by the food we eat. And in case of machines and automobiles, the energy is provided by the fuel. जो एनर्जी काम करने के लिए चाहिए, ये कौन देता है? फ्यूल. लाइक ये फ्यूल हो सकता है पेट्रोल, ये हो सकता है डीजल, कोल, ये हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा. So for doing work, energy is required. That energy in humans, it is provided by the food that humans eat, that we eat, and in case of machines, the energy is provided by the fuel that burns in the machine to provide the energy for doing a particular type of work. So in ordinary language, work means any physical or mental activity. जब हम देखते हैं ऑर्डिनरी लिटरली मीनिंग, जब वर्क हम देखते हैं कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी जो है, लिटरली जब हम देखते हैं इसकी मीनिंग वर्क की, तो हमें क्या पता चलता है? इट इज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. बट इन साइंस, ये तो हो गई लिटरल डेफिनेशन वर्क की. अगर हम देखेंगे, हम लिटरली बोलते हैं इट इज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. बट इन साइंस, इन फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन इट प्रोड्यूसेस मोशन इन इट. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, साइंस में काम तभी होता है जब अप्लाइड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाती है, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, तभी जाके हम कहते हैं इस फोर्स की वजह से कोई काम होता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस ना होता हो, बज़ाहिर तो वहां तो मेंटल एक्सर्शन है, फिजिकल एफर्ट लगता है, मगर अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर मोशन में ऑब्जेक्ट ना आए, तो मेंटल एफर्ट होने के बावजूद, फिजिकल एफर्ट होने के बावजूद कोई काम वहां पे हो नहीं रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ साइंस, दिस डेफिनेशन ऑफ वर्क, दैट work is only said to be done by the force when the applied force produces motion in the object. This work done by the force on an object, it depends upon two factors. Work done by the force
on an object depends upon two factors. Work done by a force on an object depends upon two factors. It depends upon two factors. What are those two factors? Viz, number one, it is the magnitude of the force. It is the magnitude of the force. It is the magnitude of the force. And number two, it is the distance through which the object is moved. Distance through which the object is moved. So the work done by a force, it depends upon two factors. Number one is the magnitude of the force, and number two is the distance through which the object or the body moves. So this work done by the force in moving a body, it is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body. यहाँ पे वर्क डन की एक डेफिनेशन हमें मिलेगी, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन. वर्क डन by a force is equal to the product of force applied and the distance through which the object moves. That is, if it is work done, it is equal to product of force and displacement. It is equal to the product of force and displacement. This is the mathematical definition of the work. That work done, it is equal to the product of force and displacement. Suppose it is an object. It is an object like at a position. A force F is applied on it. Because of this force, the object displaces through a distance s. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ की ये मोशन में आ जाता है और इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस s डिस्टेंस इसने कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में. तो क्या होता है, अगर ये फोर्स F इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है बाय डिस्टेंस s, मीन्स कि इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो काम हो गया है, वर्क हैज बीन डन. If W is the work done, and then it is product of F into S. This is the formula of the work done. W is equal to force into displacement, force into distance. It has three quantities in it: the work done, the force, and the distance. Knowing the value of any two quantities, the third one can be calculated. This is the definition of the work done. So we now know that this work done, it is the product of force and displacement. W is equal to F into S. Now we have three cases. The work done can be positive, it can be negative, or it can even be zero work done. Let us see those three cases, what that positive, negative, and zero work mean. Suppose we have the first very case, that is the positive work. Positive work किसको आप कहते हैं? Positive work. We know that W is equal to F into S. Suppose it is the object, force is applied on the object, and the object gets displaced through distance S. Means when the force acts in the direction of the motion, that is, force and displacement are in the same direction. Force भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है. That is, force and displacement are in the same direction. ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि it is the positive work.
it is the positive work. The work done by the force is taken as positive. क्यों क्यों पॉजिटिव लिया जाता है? Because here the angle between the force and the displacement is 0 degree. Listen, dear students, in your higher classes you will come to know that this definition of work, that is W is equal to F into S, actual definition it is W is equal to Fs cos theta. Why this theta? It is the angle between the force and displacement. Here force and displacement are in the same direction, means the angle is 0 degree. In this case theta is 0 degree. When angle is 0 degree, we have that cos 0 degree is have the value in trigonometry. Cos 0 has the value of 1. Cos 0 का value 1 है. That is, अगर आप यहाँ पे value apply करेंगे, W is equal to F into S, angle between force and displacement is 0 degree. That is cos 0 degree. Cos 0 degree is 1. That is, we can say that W is equal to F into S. तो यहाँ पे इस force को आप, इस work को आप लेते हैं positive work. When the force and displacement are in the same direction, we say that the positive work has been done by the force. And if the force acts in the direction opposite to the direction of the motion, displacement, दूसरा केस है नेगेटिव वर्क, जिसको आप कहते हैं नेगेटिव वर्क. सपोज ऑब्जेक्ट की मोशन यहां से है, ऑब्जेक्ट की मोशन यहां से है, तो फोर्स आपने यहां से अप्लाई किया, तो डिस्प्लेस यहां से हो रहा है, फोर्स आपने यहां से अप्लाई किया, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहां तो सेम डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में थे. यहां क्या आप देखते हैं, आप ये तो फोर्स था, ये तो डिस्प्लेसमेंट था. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन. यहां पे क्या आप देखते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. यहां पे एंगल यहां पे इनके दरमियान है, यस इट इज 180 डिग्री. 180 डिग्री यहां पे अगर देखेंगे इनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री थीटा. अगर हम यहां पे देखते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और इन द अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इस सूरत में क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस, एंगल जो है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री जो है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो है, कॉस 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू है, दैट इज -1. सो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू -1, दैट इज W इज इक्वल टू -FS. क्योंकि यहाँ पे FS आया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मगर माइनस, तो इसीलिए हम इस वर्क को कहते हैं it is the negative work. It is the negative work. If force acts in the direction opposite to the direction of the motion, that is the angle between them is 180 degree, in such cases work done is negative. और जब भी नेगेटिव वर्क होता है, जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कम हो जाती है. पॉजिटिव वर्क में आप देखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज फोर्स एंड मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. जब ऐसा केस है तो स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी. नेगेटिव वर्क जब होती है, in that case the speed of the object, the motion of the object, it decreases. And third case over here is that when force and displacement are perpendicular to each other. When force and displacement are, suppose the object is moving in this direction, you apply force in this direction. Force and displacement are, third case जो है, that is zero work. जीरो वर्क. तीसरा केस जो है इसका है जीरो वर्क का. क्या है जीरो वर्क, किसको आप कहते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा, दैट इज 90 डिग्री. कॉस 90 का वैल्यू जो है इट इज 0, ये 0 के बराबर है. तो अगर आप देखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो 0 वर्क है. तो तीन केसेस हमने यहां देखे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, the work done is positive work. In such cases the motion of the object increases. Number second case, when the force and displacement are in the opposite direction, that is angle between them is 180 degree. And work
done by such forces is the negative work, and because of this force, the motion of the object decreases. This third case, when force acts at right angles to the direction of the motion, that is, angle between them is 90 degree, zero work, and under the effect of zero work done, zero work, no effect of the speed, no effect on the speed of the object. ऐसे फोर्स से ऐसे केस में कोई इफेक्ट जो है स्पीड के ऊपर नहीं आता है. दिस वाज ऑल अबाउट द वर्क डन. थैंक यू.